थे, उसमें एक मणिकांत करके फ्रेश कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईडी कानपुर, फ्लॉलेस, zero defect output. He was from Bihar. That kind of capability exists. Those people have gone elsewhere. They may be in Bangalore, Silicon Valley, everywhere. Indians recognize the intellectual ability and the hard work of a Bihari. 7 साल का एक्सपीरियंस से उम्मीद हमारे समय में था, आज 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले से उम्मीद आईटी इंडस्ट्री कर रहा है। तो एक्चुअली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास बड़े ओहदे का काम आ रहा है जब आप जूनियर हो, ये बहुत अच्छी बात है। यू विल ग्रो फास्ट एज अ CEO और फाउंडर। मोस्ट मैनेजर्स आर नॉट कोच्ड और ट्रेन्ड टू डू जेन्युइन परफॉर्मेंस। आप बिहार में अक्सर आ रहे हैं और बहुत मेंटरशिप कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू फॉर ऑल योर एफर्ट। सबसे बड़ा सवाल जो अभी इंडस्ट्री के लिए है, सिंस यू कम फ्रॉम आईटी फील्ड, और हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि एक आईटी जॉब 7 एडिशनल इंडस्ट्री की जॉब को क्रिएट कर। शायद लगभग 5-6 साल से चिल्ला के पूरे बिहार में ही कह रहा हूँ, खासकर कि भाई आईटी को लाओ, क्योंकि वो 7 एक आईटी जॉब 7 एडिशनल जॉब को देता है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत सी सब्सिडी दे रही है। क्या सर आपको लगता है कि सब्सिडी ही काफी है इंडस्ट्री को यहाँ सेटअप करना? तो हम कोई सब्सिडी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो उस समय का आईटी इंडस्ट्री, आज का आईटी इंडस्ट्री, आसमान जमीन का अंतर है। टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक वर्क फोर्स। और इस समय जब आपने एक तरह से आईटी का जॉब लिया तो फैमिली का क्या परसेप्शन था? क्योंकि उस समय मोस्टली गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा फोकस रहता था। मेरे ताऊजी ने थोड़ा कि ये कौन सी ये टाटा टेल्को है, टिस्को है, तो मैंने बताया ये नहीं, ये कंसल्टिंग कंपनी है। तो कंसल्टिंग ये नाम नहीं, उनको उस जमाने में कंसल्टिंग का मतलब लॉयर या डॉक्टर हुआ करते थे। तो कंप्यूटर कंसल्टिंग क्या है? इनफैक्ट हमारे कोई थे, उन्होंने बोला इतनी सब पढ़ाई करने के बाद तूने कौन सी छोटी कंपनी ज्वाइन की है? तो शुरुआत के 15-20 सालों तक लोगों को मालूम नहीं था। जब 15-20 साल 1978 में आपने टीसीएस से अपने करियर की शुरुआत की, और तब से 42 साल से आप सक्रिय रूप से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करते रहे हैं। आपके व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? 78 में ज्वाइन किया था। टीसीएस ने ये कैटेगरी क्रिएट की। कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को देखो आप, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारा का सारा जो रेवोल्यूशन हुआ है ये पिछले 50-60 सालों में हुआ है। तो उसके साथ उस समय जुड़े रहने से करियर काफी एक्साइटिंग रहा है। Because especially in deep tech, I know it requires huge capital, but the other challenges as well. We were not scared of technology because I had spent 4 years in TCS research. But if you're not scared of technology, especially in deep tech, but that is the technology is the biggest risk in deep tech, right? Technology biggest risk, तो लेकिन अगर आप उससे घबराओगे नहीं तो फिर रिस्क नहीं रहती ना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर पी के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 1978 में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेक महिंद्रा को $7 मिलियन से $125 मिलियन तक पहुंचाया और मोजो नेटवर्क जैसे डीप टेक कंपनी का सह-संस्थापन कर उसे सफलतापूर्वक बेचा। वो एक अनुभवी टेक्नोलॉजिस्ट, सफल उद्यमी, एंजल इन्वेस्टर और टाई ग्लोबल के ट्रस्टी है। आज हमारे साथ है श्री किरण देशपांडे सर। किरण सर, आपका डॉक्टर पी के पॉडकास्ट बिहार की गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज, मुझे बुलाने के लिए अच्छा लग रहा है। सर, 1978 में आपने टीसीएस से अपने करियर की शुरुआत की, तो आपका, और तब से 42 साल से आप सक्रिय रूप से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करते रहे हैं। आपके व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? काफ़ी क्या हुआ, हम लोग 78 में ज्वाइन किया था। उस टाइम रिमोट सॉफ्टवेयर, ऑफशोर डेवलपमेंट, ये चीज़ें थी ही नहीं जी। टीसीएस ने ये कैटेगरी क्रिएट की। दूसरी बात ऐसी हुई कि कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को देखो आप, तो मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सारा का सारा जो रेवोल्यूशन हुआ है ये पिछले 50-60 सालों में हुआ है। तो उसके साथ उस समय जुड़े रहने से करियर काफ़ी एक्साइटिंग रहा है और उसमें काफ़ी समाधान और ये भी हासिल हुआ है जी। क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, उसके साथ हम लोग भी बढ़ रहे थे आगे,
और कुछ दिनों के बाद अनुभव आ गया तो उससे फिर कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया जी, जो हमने दिया इंडस्ट्री को। जी। तो उस समय का आईटी इंडस्ट्री और आज का आईटी इंडस्ट्री आसमान जमीन का अंतर है। टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक वर्क फोर्स। और इस समय जब आपने एक तरह से आईटी का जॉब लिया तो फैमिली का क्या परसेप्शन था, क्योंकि उस समय मोस्टली गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा फोकस रहता था। फैमिली को मालूम ही नहीं था कि ये कौन सी टाटा कंपनी है जी। इनफैक्ट मेरे ताऊजी, टाटा तो फेमस रहा होगा। टाटा फेमस था लेकिन मेरे ताऊजी ने थोड़ा कि ये कौन सी ये टाटा टेल्को है या टिस्को है, तो मैंने बताया ये नहीं, ये कंसल्टिंग कंपनी है जी। तो कंसल्टिंग ये नाम नहीं, उनको उस जमाने में कंसल्टिंग का मतलब लॉयर या डॉक्टर हुआ करते थे। तो कंप्यूटर कंसल्टिंग क्या है, इनफैक्ट हमारे कोई थे उन्होंने बोला इतनी सब पढ़ाई करने के बाद तूने कौन सी छोटी कंपनी ज्वाइन की है। तो वो एक परसेप्शन था। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा। तो शुरुआत के 15-20 सालों तक लोगों को मालूम नहीं था। जब 15-20 साल, हाँ मतलब 90s में एक आम व्यक्ति को मालूम पड़ना शुरू हुआ जी। उसके पहले तक बहुत मालूम था कि बम्बई में काम करते हैं, 5 दिन है, एयर इंडिया बिल्डिंग में है, तो एक परसेप्शन अच्छा था। लेकिन क्या करते हैं ये किसी को नहीं मालूम था। तो आई थिंक जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर पर फोकस किया उस समय से शायद कंप्यूटर फोकस में आना चालू हुआ। उस टाइम कंप्यूटर पे फोकस आना शुरू हुआ। और आपको याद होगा कि पर्सनल कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो 1984 में हुआ। 1984-85 में पे IBM ने PC बस अनाउंस किया, ओपन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट से उन्होंने लाइसेंस की। तो पर्सनल कंप्यूटर आने शुरू हुए और उस पर ध्यान भी दिया गया। तो तब से लोगों को थोड़ा मालूम पड़ना, लेकिन तब तक हम तो 10-12 साल से उसमें मतलब जिसको बोलते हैं ना पूरी तरह से मुर गए थे। मतलब हमको मालूम था कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए वो एक स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन था, लेकिन कॉमन लोगों के लिए वो एकदम सामने आने वाली बात थी। तो फैमिली में लगता था कि आप कोई वर्थफुल जॉब कर रहे हैं या फिर सवाल हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था? एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ कि राइट और रॉन्ग, आई वाज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। तो मुझे कई बार लगता है कि मस्ती करनी थी उस जमाने में। तो मैं जो भी करता था एक फैमिली का सपोर्ट था कि ये अच्छा ही कर रहा होगा। तो फैमिली ने मतलब ऐसा कुछ बहुत सवाल नहीं उठाए। क्योंकि शायद आपके माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे पिताजी तो बहुत जल्दी गुजर गए। 7 साल। हाँ, when I was 7 years old, he passed away very early. My mother was our parent, and she was a phenomenal lady. And she was a school teacher. तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो लाइफ बहुत सिंपल थी, लेकिन कैसे होता था कि एक जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था, जो मुंबई का एनवायरनमेंट था टेक्नोलॉजी का। मुझे याद है मैं शादी होने के बाद पहली बार दिवाली में घर गया था। तो मतलब मेरी वाइफ के रजनी के घर गया था। तो माय मदर केम विद अ टेलीग्राम कि TCS ने बोला है कि तुमको वापस जाना है। नाउ imagine your first Diwali, you have to leave everything and go to Bombay. Exactly. And so that was out of place for traditional families. Correct. But I was, we knew these things do happen in services, in software. But it was very क्या होता है कि मतलब मुझे पर्सनली TCS में उस ज़माने में हम लोग मेरे ख्याल से 400 या 500 भी नहीं, इतने लोग होंगे जब मैंने ज्वाइन किया। तो हम लोगों का वो पूरा शायद 400-500 आप लोग का इनकम भी रहा होगा उसी के आसपास। इनकम तो उससे ज़्यादा था, इनकम ज़्यादा था उससे। 1000 रुपये हमारा स्टाइपेंड था और उसमें 200-250 ज़्यादा मिलते थे। अगर आप 1200-1500 मिल जाता, 1200-1500 मिल जाता था। लेकिन उस टाइम डोसा भी 6 रुपये का था। तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। लेकिन क्या था कि जैसे IIT बॉम्बे से मैंने किया तो हमारे कई जो हॉस्टल में थे वो हमारे साथ TCS में आए। अच्छा। फिर IIT मद्रास का के भी काफ़ी लोग आए, IIT कानपुर के काफ़ी लोग आए। तो मेरा पहला जो पहले बॉस थे वो IIT
मद्रास के थे, उसके बाद IIT कानपुर थे, तो ये पूरा IIT का जो एटमॉस्फेयर था वो IIT से TCS में आ गया था। तो हम लोगों के लिए तो अच्छा था। दूसरा क्या था, हम लोग बम्बई में रहने के लिए परेशानी होती थी, वन कुड नॉट अफोर्ड। आई वॉज लकी कि मेरा एक कजिन का फ्लैट था, लेकिन लोग लॉज में रहते थे, तो सैटरडे को ऑफिस जाके काम करना उतना बुरा नहीं था, एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट था, खाना वाना मिल जाता था। सो लाइफ वॉज वेरी सिंपल। I don't think we were mature enough to know that we were doing world class path breaking thing. Exactly. हमारे CEO जो कोहली साहब थे, मिस्टर कोहली, he definitely had an idea of what he was doing. उन्होंने 1972 में एक 72-74 में कंप्यूटर सोसाइटी में एक भाषण दिया था कि नेक्स्ट 50 years 50 सालों में सॉफ्टवेयर विल ड्राइव द इंडस्ट्री। अच्छा, एग्जैक्टली उल्टा उस टाइम था कि हार्डवेयर वाज द मेन थिंग। करेक्ट, ही सेड सॉफ्टवेयर विल ड्राइव इट वाज सो फ्यूचरिस्टिक एंड इंडिया विल हैव ए मेजर प्ले। दैट वाज हिज फोरकास्ट। दोनों इंसिडेंटली दोनों 1999 25th anniversary of Computer Society of India, I was invited and he was there and I quoted him from 25 years back. तो जब आप इतने ऐसे लोगों के साथ काम करते हो, मेहनत होती है लेकिन सीखने को मिलता है, और एक ऐसा कुछ माहौल बन जाता है कि मतलब आप उसमें करते रहते हो और बड़े होते रहते हो, मतलब आप एक इवॉल्व होते रहते हो और वो आगे फिर काम आएगा। And also it's pride to work with such a visionary leaders. Right, वो शुरुआत में उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उनके साथ काम करना शुरू किया, रामदोराई जी के साथ काम करना शुरू किया, डॉक्टर निर्मल जैन के साथ काम करना शुरू किया, तो समझ में आया कि किस कैलिबर के लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, मेरा पहला जो बॉस था कोऑर्डिनेटर नटराजन करके था, ट्रेमेंडस क्लैरिटी इन माइंड ऑन सॉफ्टवेयर, हाउ टू राइट प्रोग्राम्स, तो बहुत सिखाया उसने मुझे। हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर था चिन्नू स्वामी, ही वाज फ्रॉम IIT मद्रास, he was a computer scientist to the core. You remember all your managers like I remember all my school teachers' name. I remember my school teachers also. See, जिन लोगों से आपको सीखने को मिला है, जिन लोगों के साथ काम करने को में मजा आया, वो रहते हैं आपके दिमाग में। And just because of these visionary leaders, today India leading on the software industry, and now of course on the artificial intelligence technology and all this. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको all industries, here is an example of a industry that was created in India and exported globally. उस टाइम का मतलब माहौल कैसा था कि आप जॉइंट वेंचर करो, टेक्नोलॉजी कम। सो मुझे ये अभी भी जब लोग बात करते हैं कि वी नीड टेक्नोलॉजी, आई आस्क ए क्वेश्चन, आई मीन वी आर द टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स, व्हाई डू वी नीड दैट? दैट डजंट मीन वी शुड नॉट, बट एक इक्वल गेम होता है। समथिंग यू विल डू, समथिंग अमेरिकन्स विल डू, समथिंग चाइनीज विल डू, बट यू हैव एन इक्वल गेम, इक्वल पार्टिसिपेशन। वो TCS के उस जमाने में हुआ, दैट इट वाज ए eclectic company, at least as far as we were all concerned. तो मजा आया उसमें। So now इतना सारा being a technical and being such a veteran and a leader from start, and you being a marathon runner as well, plus you have a great interest in music, कैसे आप बैलेंस करते हैं सारी सब चीज़ों को? एक्चुअली हो जाता है वो बैलेंस। मतलब जैसे आज आपने देखा कि दिन भर हमारा अपना टाई पटना का कार्यक्रम था, फिर ट्रैफिक जाम में फंस गए, फिर आपने इतने बढ़िया मुझे रिसीव किया, तो थकान वहीं खत्म हो गई। जब मैं होटल में जाऊंगा तो सोने के पहले 5 मिनट संगीत सुन लूंगा, लेकिन कल जब किस तरह का संगीत सुनते हैं सर? सभी तरह का क्लासिकल, क्योंकि हमारे परिवार में क्लासिकल काफ़ी डोमिनेंट है। कभी कभी गज़ल पुरानी वो सुन लेता हूँ, कभी मतलब बॉलीवुड के लेजेंडरी नंबर सुन लेता हूँ। आई ऑल्सो लाइक मॉडर्न म्यूजिक। अगर सुनिधि चौहान का गाना अच्छा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो मॉडर्न म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है, सारा नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो गाने आए विविध भारती के सबको याद हो जाते थे और याद रहते थे।
आजकल आपके फिल्मी संगीत याद नहीं रहता है, बट सुगम संगीत काफ़ी है जी। प्राइवेट म्यूजिक काफ़ी है, गज़ल काफ़ी है। तो गजल में जगजीत सिंह और चित्रा, जगजीत सिंह, चित्रा, आपके गुलाम अली, हुसैन बख्श, पंकज दास, हाँ वो सब मतलब क्लासिकल ओरिएंटेड। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ बेगम अख्तर। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका संगीत। मतलब सर ये रेंज है आपका जहाँ पर आप हर तरीके का संगीत सुनते हैं, और आज यही रेंज आपने जब टेक महिंद्रा एज ए सीईओ ज्वाइन किया और उस कंपनी को $7 मिलियन से $125 मिलियन तक लेके गए। सर क्या रणनीति रही आपकी, जो आप इतना शॉर्ट टर्म में कंपनी को, उस समय शायद महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम, टेक महिंद्रा उसको महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम या एमबीटी बोलते थे उसको। ब्रिटिश टेलीकॉम और महिंद्रा के साथ टाई अप था। एमबीटी एक उसका शॉर्ट फॉर्म था, एक्रोनिम था। इसे आई वाज अ रूकी सीईओ फर्स्ट टाइम, है ना, लेकिन मेरे पास सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपीरियंस काफ़ी था, बिजनेस डेवलपमेंट का भी था। और इंटरेस्टिंगली आफ्टर बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स आई जॉइंड टीसीएस रिसर्च, सो आई हैड good role in building new technologies and doing research. I think you were a pioneer who brought TCS sales team to US. I was actually one of the very young professionals with 2 or 3. Our CEO and Mr. Ramdurai, they picked 3 or 4 of us. मतलब वो हिंदी की भाषा में एक्चुअली रंगरूट थे। मतलब हम अपने नशे में, मतलब मैं नेटवर्क ग्रुप में था। अच्छा। What was your forte? Was network or development और सभी करते थे, और मैनेजमेंट और मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे यही काम दो वही काम दो। Completely versatile. जो प्रोजेक्ट सामने आया उसको करना है, बस उसको अच्छे से। You have a huge breadth. हाँ मतलब या तो ये समझ नहीं थी कि पूछना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा टेम्परामेंट था कि I am here to provide my services, or I am here as an employee to do projects, and so I must do whatever is given to me rather than asking for it. वो एक समाव जहन में था जी। हमारी लाइब्रेरी उस ज़माने में टीसीएस की बहुत उम्दा लाइब्रेरी थी, और मुंबई में आपको मालूम है, आप लोकल से आते हो तो 55 घंटा लगता है। जी। तो मैंने कहा यार इधर उधर फ्रस्ट्रेट होने बजाय लाइब्रेरी से मैं मैगजीन्स और बुक्स बोरो करता था और पढ़ता था। तो 2 घंटे अगर आप रोज पढ़ो तो कहीं ना कहीं तो फायदा होता है उसका। तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो रणनीति क्या रही सर वो 7 मिलियन टेक महिंद्रा में रणनीति ऐसी रही कि एक तो पहले हम लोग जैसे इसी कंपनी में बहुत अच्छे लोग थे जी। जो मैं ज्वाइन किया 250 करीब लोग होंगे, लेकिन एक लीडरशिप का वैक्यूम था, थिंकिंग का वैक्यूम मुझे लगा जी। पहली बात। तो 2-3 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि इट इज़ नॉट माई, मतलब ये मैं अगर कितना भी अच्छे से काम करूँ लेकिन अगर बाकी लोग नहीं करेंगे तो मेरा फेलियर है। ये पहला रियलाइजेशन। एग्जैक्टली सेम लाइक अजाइल इंप्लीमेंटेशन करना, टॉप आप कुछ मैनेजमेंट इज नहीं यू आर एज गुड एज योर वीकेस्ट लिंक एज अ सीईओ। वो पहली अकल आ गई जी। Then I realized that people are not ready to take decision. Okay. तीसरा समाव मुंबई और पुणे मतलब एकदम ही अलग अलग थे। So you shifted from Mumbai to Pune? No, I actually joined MBT because I was given an option either to stay in Pune or Mumbai. Okay. And we wanted to move from Bangalore to Mumbai, and that was the driver for looking for a job. Okay, Otherwise, I was doing very well. To your hometown near? हाँ मतलब my mother used to be with me in Bangalore, and she didn't take kindly to the Poland. Okay. तो अच्छा पुणे में my sister used to live. So I said ठीक है पुणे ट्राई करके देखते हैं. This opportunity came. Then I got selected to be a CEO. So we came there. Profit कम था. जी. जैसे आप जानते हो largely business was on-site services to BT. So that brought the profit down. And we were not, I think we had good people, but we were not playing the game. It's like you're a good test player and you're only playing Ranji Trophy. वो नहीं चलेगा ना. You have to push yourself. Exactly. तो 2-3 चीजें की मैंने. एक तो पहले 2 या 3 महीने में I took our top 35 people to Lonavala. Okay. हाँ, for a strategy workshop. Wow. Okay. कि यार ये how many days? 2 days, 2 or 3 days. Okay. 2 days I think. Okay. And I was very clear that we have to take responsibility of this company into our hand as to what we are doing, why we are doing, stuff like that.
So out of 250 people, you chose 30 people. Top So 30 what was the criteria you picked only senior 30? people. Senior people. Okay. मुझे Middle management or top management? मुझे इतना में कौन टॉप पे था कौन बॉटम में ये भी नहीं मालूम था. बहुत सारे layers थे. Okay. But I said okay, I knew some people, asked some people, so who are the top people? So we And went who there. were growth focused or oriented maybe? हाँ, सीनियर कोई प्रोजेक्ट लीडर है जो बड़े प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं वगैरह वगैरह सबको लेके गए. आइडिया वाज दैट वी वॉक आउट फ्रॉम देयर विद ए क्लियर दैट वी आर गोइंग टू टेक कंट्रोल, नॉट बीइंग ड्रिवन. Okay. सो वी आर नॉट बीइंग ड्रिवन बट वी आर टेक कंट्रोल. तो उसमें 2-3 चीजें सामने आई. एक तो मुझे समझ में आया कि वी वर गुड इन टेलीकम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली कस्टमर केयर एंड बिलिंग, provisioning. Okay. ये चीज हमको अच्छे से मालूम थी. Provisioning, we had a strong area. We were very good. We didn't have networking and that kind of a thing, which was more sparkling kind of business. पर ऐसे ये मुझे मालूम था ये था. दूसरा मुझे समझ में आया कि if we do offshore, I think the company's texture will change because profit will increase. We were putting more people because of time and material. And we were very cost effective, so I think projects were overstaffed because the BT manager didn't care. They could afford more because they didn't get so long. They could BT India came into picture. It's like maybe a brutal comparison. So you have 2,000 rupees and you get a shirt for 500 rupees. Exactly. आपको 3 की जरूरत है, चौथा भी ले लो, 500 मिल रहा है ना. Exactly. So we have very good value for money. Exactly. But if we move to offshore project-based approach, then I would only put as many people as are necessary. Yes. And I found that in the evening, most of the office was empty. Okay. So 6:30 पर last bus गई and I was looking around. पिंपरी चिंटू ऑफिस में कोई नहीं रहता था, सबके सब चले आते थे. Sharda Center was not there. Sharda Center was not there. So मैंने सोचा यार कि हम लोग इतने स्मार्ट तो नहीं है कि इतना काम रोज. Software is a place where someday you will have to spend. Of course, and especially deployment and all go live. So I would sort of talk to the when you talk to operating team, so they got used to a CEO who would come and chat with them. Okay. So हाँ सर फ्राइडे का डिलीवरी है लेकिन खत्म हो गया काम वेडनेसडे को. तो तुम 2 दिन क्या करोगे? Whatever we'll do. I realized that there was a latent resources. So we turned it into offshore. And I spoke with the key BT executive. He was very supportive. I said, look, if I release some, intellectual human power out of it, we can go and look for another business, which is good for everyone and for you definitely, because BT was also an investor in the company, in MBT. That worked out. So first year, the profit went up by 12 times. Oh, wow. So now in the first year, revenue went by twice, revenue almost doubled, profit went 12 times because we had so low a profit that 12 times actually. What was the profit sharing between Mahindra and British Telecom? See, I think they had 60-40 60-40 at that time. And it was done the company was not meant to do software. It was meant to do something else. That didn't happen. Then it was reprovisioned, pivoted to software, which is correct thing to do. So, and we also did reasonably good treasury management. Okay. So 3 crores came from just the treasury management. So it was all over. I was kind of lucky that I inherited power of good team. As a CEO, I gave it. You implemented a lot of good measures like optimizing team, offshoring the resources. मैंने बताया यार, the right things. We are all good people. Yeah. I didn't bring anybody from outside. Generally, CEOs bring their own team. Yes. So everybody was a bit tentative कि अभी क्या करने वाला है. So they were all, once they got comfortable with me, I found good people there. So there was no need to bring anybody else. And I'm, bit an experimentative person. कि अगर ये रास्ते पे सब जा रहा है तो can I try this route and see what happens? So that nature was there. It all worked out very well. I think the market was also there. Y2K was in front of us. Okay. In telecommunication, the traffic was moving from voice to data. Correct. Voice was the revenue earner, data was not. Business models were not fixed. I think 20C products would have been there. 20CN products. I think they came a little bit later. But if you say 96, 97, the firewall started happening and all that. The data was beginning to be discernible, but the revenue was in voice. Yeah.
So there was a pressure on the spend, and we came in very handy. Y2K plus all of this was like a good environment in which to grow the company. And if you recall, during the 90s, after Infosys did, I think, an IPO, their IPO was, I think, around 94. And they, credit to them that 10, 12 years, they stayed onto their thesis, and they grew very fast in the 90s with liberalization. With their IPO, they became into Cognizant got formed. TCS found its rhythm. All thanks to Narasimha Rao ji. Narasimha Rao ji, we were, 214% duty on hardware disappeared. Yes. A whole lot of things happened. Yes. From where the industry grew. Luckily, some of us were in the industry for now 17, 18 years. Okay. So we knew it's like, if I take cricket, I've been playing for a while. Now I suddenly bright sunshine and, I can hit the ball. So lot of good growth happened. You asked a question, what was the difference between now and then? I think it was truly a solution-oriented business. Correct. Today, everybody knows what is offshore, so it has no longer remained. There is a part of it will be solution, but a lot of it is large scale, do this kind of a business. I have left services long time back, but that's my understanding from at a very high level, talking to senior people in the industry. So. How was the mentoring? You said that you started the company when it was 400, 500 people. Mm-hmm. So by the time you end up with Tech Mahindra, what was the resource count, and how did you, at least in the different cities within India and overseas, near shore, onshore, how was the plan? See, the plan was actually I was hired as a CEO to implement Vision 2000. Okay. So I think 50 million pound and 2000 was the criteria. I think I don't remember which year we achieved, or I think second or third year we achieved 5-year plan. Nice. So everybody forgot about Vision 2000. It happened much before. I think the market was there, but we stayed focused. So I didn't go and try other things. A lot of, अगर आपको याद होगा कि SAP implementation had started at that time. Mahindra was one of the largest SAP user. Yeah. So a lot of people said you go do SAP. मतलब जब आप देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, people give a lot of suggestion, but we stayed focused on telecom, on within that carrier business, customer care, billing, provisioning. Then we started looking at networks. Then we started looking at centers of excellence for mathematical modeling, because that center of excellence, then user interface design. So wherever I think my 4 years of research in TCS and love for computer science, I would sort of spot an opportunity, talking to people, reading, talking to my friends in the industry. I knew while I lived in Dallas, I knew some people who were technology developers. So I kept my focus on that. BT executives, managers were very welcoming, friendly. They would whiteboard with me. They would brainstorm with me. They liked me as a CEO while I was there. So they will wait for, when are you coming next? Let's whiteboard this idea. Actually, Britishers, if you do the things right, they will always appreciate. They were very good. They were very good. So they actually helped us. They also introduced us to other carriers. See, you used to go to London, or you go to Ipswich, Bristol? I went everywhere. London, Cardiff, Ipswich, everywhere. Yeah. So what was the power center of British Telecom at that time? See, BT at that time there was London Center. Bernardo House. Brian Giffen used to run it. Then there was Belfast. There was Ipswich, Martlesham had research and some technology component. The Second World War station. Networking, all of that. It is dismantled, right? It's been dismantled, correct. Cardiff was there. And there was some small here. So I would go to every center, I would meet people, I would meet program managers, project managers, stuff like that. And Y2K was coming. So sometimes I ran into technologies like database architects and all. Coming from technical background, somewhere I would send a mail and they would think, at one time somebody said, oh, this guy knows databases, let's hire him.
So somebody told me he's the CEO of the company. So ऐसे भी कुछ हुआ मतलब. So you have not only played, आपने सिर्फ बहुत सारे रोल ही नहीं प्ले किए बल्कि देखा जाए हर टेक्नोलॉजी में फिट हुआ. एक्चुअली क्या है ना, टेक्नोलॉजी बिजनेस का ऐसा है कि आपको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए. Exactly. जी. मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे टेक्नोलॉजी समझ में. देयर आर पीपल हु विल डू इट वेल, बट अगर आप देखो कि टेक्नोलॉजी जो बिजनेस है और सॉफ्टवेयर बिजनेस है, मिस्टर मूर्ति, मिस्टर कोहली, जी. you know, Lakshmi from Cognizant, Yes. Rajesh who ran Settle, we were all programmers at one point in time, you know. Exactly. And good programmers, you know. So I think that Mr. Kohli was a power engineer, but he was a very powerful engineer. So he was an engineer with an understanding of the technology. That is required. I remember जब मैं छोटा था तो electricity board में Kocher was the chairman of electricity board. He knew exactly where the problem is. Correct. So the employees and the staff can't take them for a ride. Correct. So if you are deep rooted and you know the technology and in and outs of it, then of course job becomes easier. दूसरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हम लोगों को एक हमारे जहन में डाला था टीसीएस में कि वी आर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी. तो हम बहुत ही यंग थे तो कभी मजाक भी उड़ा के थे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन नहीं हो प्रॉब्लम तो क्रिएट करके फिर सॉल्व करेंगे काइंड ऑफ थिंग. बट यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन प्रोजेक्ट्स गो बैड और समथिंग डजंट हैपन, एट्रिशन हैपेंस. आई नेवर डिनाइड द प्रॉब्लम, नेवर प्लेड defensive, it doesn't exist. There were times when we messed around with the program was complex, and these things do happen कि mistakes compound. So the programmer who was assigned couldn't comprehend that, पड़ गया, नहीं चला. The person in London is unhappy. So I would actually sit down with them, give a call. यार देखो, this program is complex. They were surprised that as a CEO I've gone through the program. So I said, look, unless I see I need to get a feel. See, if I'm coming to meet you, आप एक thread निकाल के तो मैं बैठता था, ये बताओ तुम क्यों नहीं हुआ. So I would get a feel कि this is a complex program, young programmer है. We would. But it's not very common कि कंपनी का CEO 2-3 चीज की हमेशा ग्राउंड में रहा. Though they appreciate because they don't get time. छोटी भी थी ना कंपनी. कंपनी छोटी भी थी. हाँ. Exactly. If you look at today's companies where they have hundreds of thousands of employees, it would be difficult for a CEO to do the stuff that we did when we were small. And operating environment has also changed a lot. Cost pressure आप देखो, demographic देखो, cost entry अब देखिए tariff आ रहा है. lot of things we have to consider. Technological challenges. I also feel that somewhere down, and you know, maybe some of our senior leaders in the industry may question me, we lost track of efficiency and productivity. So you look at other industries. I always compare auto industry. You have to create a better model, better automobile at the lower or same price. सर मुझे लगता है कि फैक्ट्री मॉडल आईटी को, सर्विसेज सेक्टर को सीखने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा. बहुत टाइम लगेगा. We tried to inculcate those factory model जिसे आपने कहा ऑटोमोबाइल, but we could not achieve. And because we have such an arbitrage, there were people I used to tell in Tech Mahindra that look, we have this arbitrage, but don't misuse it. Our engineering productivity has to go up. पर सर प्रोडक्टिविटी बात करते हैं मूर्ति जी, इन लोगों का तो व्यू कुछ और है भाई. वी नीड मोर प्रोडक्टिव आवर्स, पीपल शुड बी गिविंग मोर वर्किंग आवर्स. डू यू थिंक वर्क लाइफ बैलेंस हो सकेगा? और इसकी जरूरत है क्या? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस का ऐसा है कि आपके दिमाग में है जी. यू माइट वर्क लाइक टुडे, जैसे आप 10 बजे तक यहाँ वेट कर रहे हैं. I mean, you have had a long day, I have had a long day, but the day has been enjoyable because we have done something useful. And right? Fruitful and value. Fruitful. Now tomorrow, I'll tell you my days. I'm taking a flight to Pune. I might read something in the morning. I've got a book on ecology, a ACM magazine. I go to Pune and I have some of my classmates coming for dinner. Okay. So tomorrow is very chilled out day. अब आप दो वर्क लाइफ बैलेंस को कितने कहाँ तक ले जाओगे? एंड शो मी वन पर्सन हु हैज नॉट पुट इन हार्ड वर्क एंड बिकम सक्सेसफुल. आई हैव नॉट सीन वन, और एटलीस्ट आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि वर्क लाइफ बैलेंस करके आई विल ग्रो इन लाइफ. सो आई थिंक what Mr. Murthy said or what Shantanu said in their podcast, they were transparent enough to say it.
Okay, I get you. But if you want progress, you will have to put in effort. I think they were thinking to more inclined to grow. And until we as a collective, resource based, don't put some extra, then of course, because we have a lot of delta to fill in. We as an Indian. Otherwise, you'll remain poor. Same You'll remain poor, and it will not work. In fact, in my first year in TCS, I had a very difficult. That system was broken. जी. And I was an inexperienced programmer, so I used to work very hard. So I used to stay with my cousin, and my bhabhi always said कि तुम जिस दिन ऑफिस जाते हो उसके दूसरे दिन आते हो, because I would take the last local. Oh. But it taught me so much about software that stayed with me for the rest of my life. And I was a bachelor, so that was the time to put in hard work. So सर आपने इतने स्टार्टअप को मेंटर किया, and you know that to be successful and extract that from local business to a scalable or fundable company or a startup, it needs a different mindset. So what is that one quality which you look for while mentoring such startup? बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना, बट कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन यू मीट एन एंटरप्रेन्योर, जी, आपको एक वो आ जाता है कि यार जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना जी, जौहरी का परख हो जाती है. हाँ, जौहरी की परख हो जाती है. बट अगर आपको एक बहुत स्पेसिफिक हो, थोड़ी क्यूरियोसिटी होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए, दिमाग में डाउट कि कैसे होगा, हम हायर कर पाएंगे कि नहीं, जी, सिचुएशनल थिंकिंग होनी चाहिए, जी, आइडिया अगर एवरेज भी हो जी, तो उसको आगे ले जाने की आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हमारे जैसे लोग जिन्होंने एकदम नई आइडिया के साथ काम किया, तो उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अरे ये पहली बार कर रहे हैं, वर्ल्ड में होगा कि नहीं. तो ये सब चीज़ें साथ में आती है, प्लस ह्यूमिलिटी. आज जो ह्यूमिलिटी की बात हुई ट्राई में कि मतलब यू हैव टू बी क्यूरियस, सिचुएशनल थिंकिंग स्मार्ट होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू लर्न क्विकली, अफेबल होना चाहिए. जी, हाउ विल यू हायर पीपल इफ यू आर नॉट अफेबल. तो ये सारी चीज़ें साथ, प्लस ए गुड थीसिस. मेरे पास 2 साल पहले एक कंपनी में मैंने एनुअल उनका डे था, आई हैड गिवन अ टॉक, सो आई एक्चुअली पुट 60 years ऑफ कंप्यूटिंग वन स्लाइड में. ओके. हाँ, तो ऐसे मेजर माइलस्टोन्स आए हैं, वो आपको समझना चाहिए. उसके अराउंड आप क्या कर सकते हो, जी, एटलीस्ट इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में. सो ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है. कई बार भेड़ चाल भी चलती है कि सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी स्टार्टअप करना है. जी, यू माइट बी अंडर, बहुत हो रहा है ये पर. दैट माइट बी अ रिस्क. सर आपने टीसीएस में काम किया, टेक महिंद्रा काम किया, उसके बाद हमने मोजो नेटवर्क पे अपना डीप टेक टेक्नोलॉजी पे यू वर co-founder about it, which I think were working on the Wi-Fi infrastructure. So sir, what is the challenges you faced in establishing that Mojo network? Actually, Mojo network was quite fun. Because especially in deep tech, I know it requires huge capital, but there are other challenges as well. So it requires capital upfront. See, we were not scared of technology, because I had spent 4 years in TCS research, where we had done some very advanced work. But if you're not scared of technology, especially in deep tech, but that is the technology is the biggest risk in deep tech, right? हाँ, टेक्नोलॉजी बिगेस्ट रिस्क. तो लेकिन अगर आप उससे घबराओगे नहीं तो फिर रिस्क नहीं रहती ना. Exactly. दूसरी बात ऐसी है कि आवर को-फाउंडर डॉक्टर प्रवीण भागवत, जी, a very close friend, his idea, he is the designer, his research in unlicensed radio became Wi-Fi. So he knew Wi-Fi inside out. Okay. And he knew the security loopholes in Wi-Fi, in the protocol, which he designed. So इसलिए आपने ताला बनाया, आपको मालूम है ताला कौन तोड़ सकता है, तो आप उस पर फिर काम करते हो. So we knew that security will have a play. लेकिन हम लोगों का जो फ्यूचर थीसिस था कि ये जो टेक्नोलॉजी है जो आज लैब में है, ये एंटरप्राइज में डिफ़ॉल्ट कनेक्शन फॉर एंड यूज़र रहेगी. आपका लैपटॉप है, आपके बाकी डिवाइसेस हैं, टू कनेक्ट टू द नेटवर्क पीपल यूज टू यूज ईथरनेट केबल. दैट केबल विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस रेडियो
Just the way landline phones have been replaced by mobile. Correct. ये हमारा thesis था. Okay, okay. And therefore, Which year this thesis was? this thesis was 2002. Oh, 2002. quite early. Quite early. So I think that was उसी समय शायद हमारे पास मोबाइल कॉमन हो रहा था. Mobile इनकमिंग कॉल्स के लिए भी पैसे लगते थे. पैसे लगते, इनकमिंग कॉल के लिए पैसे लगते थे. कुछ लोग अपना शो भी दिखाते थे कि मेरे पास मोबाइल है. मोटोरोला का ही वो सेट हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, वो एक ब्रिक टाइप फोन हुआ करते थे. छोटे फोन भी आ गए थे, डिस्प्ले में ब्लू डिस्प्ले हो जाती थी. इट वाज ए डिवाइस टू बी शोइंग अराउंड कि मेरे पास मोबाइल है. स्टेटस सिंबल हो जाती थी. स्टेटस सिंबल होता था, क्योंकि इनकमिंग कॉल भी लग रहे हैं. मोबाइल डिवाइस खरीदना कॉस्टली था. Someone if you carry a mobile phone, you know. So we had that thesis. That thesis was, it was a bet on future, which always deep tech is always a bet on future. Yeah. We put that bet on future and we resolved that I think it'll happen. See, by 2002, I had spent 24 years in the industry. So I was not a rookie in that sense. I could have gone wrong, but I was not a rookie. Okay. Praveen had spent more than 10 years as a lead researcher at IBM Research. Okay. So he was, and कई बार क्या होता है ना, हम लोग केमिस्ट्री जम जाती है, तो केमिस्ट्री हमारी जम गई. Okay. तो कमिंग टू द प्रॉब्लम, हमको मालूम था कि हमको वी हैव टू रेज मनी, विदाउट होगा नहीं. हमने इंडिया में ट्राई किया. आज भी डीप टेक के लिए फंडिंग नहीं है. डिफिकल्ट फंडिंग है. पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, वी हैव मूड है. काफ़ी हमने प्रोग्रेस किया, लेकिन अभी भी सिलिकॉन वैली टाइप की फंडिंग नहीं है. तो वी डिसाइडेड टू गो टू सिलिकॉन वैली. Okay. So we went to Silicon Valley. Okay. We stayed there for 8 months and raised a first round. So you went to Silicon Valley. आपने फंड लेने के लिए Silicon Valley. Fund लेने के लिए गए. And you could sell your hypothesis and the We case study. sold our hypothesis. You sold it. And it took us, I think we were there in July, August 2003. So what was the capital you were expecting and how much you could get it in terms of percentage, not in terms of the figure? See, we raised first round of 10 million. Okay. First round of 10 million. We started with 4 or 6 million. But then करते करते नहीं यार, 8 करते हैं, 10 करते हैं यार, तो 10. हाँ, तो confidence grow होता है. Confidence grow हो गया. Lot of rejections. Lot of VCs would reject. But one thing I must share with you, at that time, Silicon Valley VCs were very professional. If they did not want to invest, they would tell you very, very quickly. They had a deep pocket. उनके पास काफी पैसा था. So since sometimes they don't, their portfolio, they may not want to invest in our idea. हो सकता है. They may have found this too future risky. There could be multiple reasons to not. आज US survive कर रहा है. Silicon Valley surviving and US just because of these deep tech technology. So they do. So it takes a while. So it's not that we failed in raising a round. When we raised a round, there were 4 VCs. आपने private venture capital. Very classical venture capital. Because government के साथ तो बहुत spending. For example, अगर देखा जाए research and development, आज भी भारत 0.7% of GDP spend कर रहा है compared to 3.6 for US. Correct. So they have lot of fund and government funds भी बहुत है. So today, that was not a challenge for you to get the fund. No, right? we knew what we were building. Okay. We were building wireless security sensor to protect enterprise networks from Wi-Fi attacks. हम लोगों को बहुत clear था. This is what we are building. Why we are building? Because this technology will find its way in enterprise, and enterprise puts a premium on security. So government, banks, data centers, defense, large enterprises, they will be our potential users. Banks especially. Banks, large enterprise, defense, fortune companies. Yes. Because कहीं break हो गया तो आपकी reputation खराब होती है. Exactly. So we had very clear about that. Our challenges were that we were not founders from Silicon Valley. Yeah. So curiosity भी थी, ये founders India से हैं, but we were very well known in our individual. Praveen was a respected researcher in wireless world. Okay. I had my stint from Tech Mahindra, so anybody called up, I would get a positive. My people in TCS who knew me had positive things to say about me. So they knew that these were good professionals and they were doing this. So it took about 8 months, but we had 4 large funds who put the money in the company. So we were successful in raising a round. You would be lucky if you can raise a round of that time even today in 2 months. It will take you 6 months, 6 to 9 months with a good thesis.
by the time everything closes and by the time you see the money in the bank, due diligence शुरू होता है. तो founders today, many times I ask them दो चीजें कि तुम्हारी एंटरप्राइज का लाइफ साइकिल क्या है. आप जंबो जेट बना रहे हो, एयरलाइन को बेचने में आपको 3 साल तो लगेंगे. yes. जंबो जेट बनाने में 2 साल लगेंगे. स्लो प्लेन बेचने में आपको 10 साल लगेंगे. 5 साल में कैसे क्या होगा, है ना. एक बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल, मोटा मोटा एग्जाम. लेकिन आप ब्लिंकिट टाइप कंपनी बना रहे हो विच इज क्विक ऑन अपटेक. नाउ दैट कंपनी कैन स्केल अप लाइक दिस. सो अंडरस्टैंडिंग enterprise is which game you are playing. Correct. Are you playing a T20? Are you playing a test match? Are you playing a tiebreaker of tennis? वैसे deep tech हमेशा test match ही रहा है, right? सारी companies, urban company को कितने साल लगे before they became? They've been around for long. But are they really deep tech? Because no, see, I'm saying even a service company like urban company, which the market. The reason deep tech takes time because market develops later. See, if you have a ready market, it's a different game. वहाँ भी रिस्क है. वहाँ भी रिस्क है. See, two risk are there. में आपका मार्केट फ्यूचर में इसलिए रिस्क है. And commercialization to the अगर public. आपका मार्केट फ्यूचर में आने वाला, जैसे क्विक कॉमर्स, Correct. है ना. क्विक कॉमर्स का मार्केट अब आया इंडिया में. अगर किसी ने 10 साल पहले कंपनी क्रिएट की होती, they would not do it. Exactly. Urban company is a good example. That used to be Urban Clap, I think. Remember? I think they came into existence 2016-17 around that. But बहुत सारे इंडियन कंपनी in phase 3, say for example phase 1 देखा जाए तो सर्विस इंडस्ट्री थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टिकट, TCS came in. Phase 2 was GCC. Phase 3 कहा जा रहा है कि was mostly a copycat. For example, हमारे पास Amazon था, हमने Flipkart बना लिया. Correct. Some stuff. That is an easy job. But you see, building and enterprise, phase 4 is deep tech. That is tough. It takes time. You see, it depends on the individuals. I rather do a deep tech because my DNA. Luckily, if I know something in the computer science, I can see it before anybody else. So I may find building a consumer company difficult, but a consumer industry founder may feel यार deep tech नहीं करना है. So हर एक, see, it's like you're a bowler, you're a spin bowler. है ना. क्या कारण है सर, कंपनी इंडियन स्पेशली बहुत हेजिटेंट है in investing, especially in R&D, deep tech? क्यों? Are they only looking for shorter gains? I think we have ourselves to blame. I have a slightly different view of the license Raj. Okay. See, government never said you don't do R&D. Government put a control on what you are producing and how much you are producing. And the companies were very profitable. Can you imagine you have to apply for wait in the line and you will get your vehicle after 5-6 years having paid in advance. Correct. Why would you not do research? Yeah. I would ask that question. Why would you not do research? गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो जिम्मेदार है सर. अगर आप CSR के लिए नॉर्म्स बना रहे हैं, why don't you make, if you want to drive your country? My point is, see, why does government have to tell you everything? That's correct. See, I was in Tata Group. I remember we used to talk about trusteeship concept of management. 80% of the profit at that time of Tata companies would somehow flow into trust, which will fund the national projects. Later down the line, foundations have come. So there are people like today, we saw 5 social entrepreneurs. किसी ने उनको ये नहीं बताया कि आप ये काम करो. There was a Padma Awardee there. I think not doing things which bring value, the management have to be blamed. Oh. Management have to be blamed. To certain extent. Completely. Management. If I am a CEO of a company and I must understand where the differentiator will come. That's correct. Right? If that differentiator can be created through research and development, I must find resources to fund that research and development. Correct. And I must get board approval. That's my job. That's the reason I'm a CEO. And you have a greater visibility compared to the rest of the anybody else. If you're not doing it, you can't blame the government or anybody else. It's people, the corporate leaders have to blame themselves. And it's not that nobody has done. There are
exceptional stories of research and development in India, but the overall we lack. ठीक है सर, जैसे आपने कहा कि हर चीज गवर्नमेंट ही क्यों करेगा, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सर गार्डियन तो वही है. अगर फॉर एग्जाम्पल वो गार्डियन का क्या काम है, इफ यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक दे implement through policies or laws whatever may correct. to put the things on track. But सदियों से और दशकों से गवर्नमेंट ने कभी R&D पे फोकस नहीं किया. अगर आज हम यूएस आज हम पे इतनी धमकियां दे रहा है, तारीफ में हम उतने स्ट्रांग नहीं है इस पोजीशन में कि उस लेवल तक हम नेगोशिएट करें, कहीं ना कहीं हमारा R&D फेल हुआ. हमारा डीप टेक टेक्नोलॉजी अगर हम उस पर एज होती तो चाहे डिफेंस के बाद, बिकॉज़ डीप टेक मोस्टली डिफेंस से बहुत बेनिफिट कर रहा है. आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, करेक्ट, क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर, जैसे यूएस गवर्नमेंट है, दिस होल क्लाउड was pushed by the US government. When they started web scalers coming up, they realized that Azure, Google will have a global play if the cloud becomes the default. Even the GPS. Silicon Valley exactly. We didn't do that. To that extent, I think our government has failed. Now, I would say government could have created incentives, but जो आजकल ये सोच है कि गवर्नमेंट की जवाबदारी है, दैट आई डोंट एग्री विद. आई एम विथ यू सर, दैट आई डोंट एग्री. जैसे आपने टेक महिंद्रा में जो सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस है, हमने क्यों क्रिएट किया? बिकॉज वी वर सीइंग अपॉर्चुनिटीज. दीस सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस वर नॉट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट यू सी इन अ डीप टेक कंपनी, बट दे वर research outfit where we created differentiated skills. We did it better than anybody else. That's how we got, next generation network projects. We got user interaction. We realized that mobile phone pe agar when we started getting that a lot of work needs to be done designing user interface of a mobile phone, that requires extra skill. So I said, let's put some effort in doing that. So just training doesn't help. So you have to put some people to do that. So ये आपकी जवाबदारी है कि कंपनी को competitive बनाना. सर इसी में since you come from corporate, especially such a top corporate from Indian corporate Tech Mahindra, सर एक और चीज कहा जाता है कि सर्विस सेक्टर हमारा हमेशा से फोकस सर्विसेज पर रहा. We have not focused on product development, and we are very, very thin. We could not even develop a product mindset within our resource bases. Has US built a service mindset? Okay. Has Silicon Valley built a service mindset? But they are getting the people for low cost resources, so for them it was not interesting. Think sir, product importance is more compared to services. No, my point is, as an economy, we have figured out we are service capital of the world. Yeah. Right? I see no reason to be diffident about it. Okay. Right? Yes, we need to do products. Zoho has demonstrated that you can sit in the jungle and do it. Sridharan has shown it. It may require capital. Capital हमारे समय नहीं था, तो हम लोग US सिलिकन वैली चले गए. अब आपके पास आज कैपिटल मिल रहा है आपको. कुछ साल पहले कैपिटल, जैसे आपने बताया कि सिर्फ ट्रेडिशनल इसमें आता, जैसे फ्लिपकार्ट, these are, see, no business is easy to build. So I am not downgrading their effort of a Flipkart founders कि उन्होंने क्या किया. They are very smart people. They built it. Now people are, there are funds now who are saying pre-revenue deep tech companies. So ये जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ है. आज तक क्यों नहीं हुआ, अब वो खत्म हो गया बात. लेकिन सर अभी भी टेल यू, अभी जैसे पीयूष गोयल जी ने बहुत बड़ी बात की स्टार्टअप्स के, कब तक हम छोटे मोटे स्टार्टअप्स रहेंगे. और अभी जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा फोकस, स्पेशली आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा फोकस सर्विस में रहा. हम आएंगे उस तरफ भी जब टीएनएम और फिक्स प्राइस की बात करेंगे. सर प्रोडक्ट फोकस कम रहा, माइंडसेट नहीं बना पाए, सर्विस पे ज़्यादा फोकस किया. और पीयूष गोयल जैसे हमारे मंत्री कहते हैं कि ठीक है स्टार्टअप में छोटे छोटे स्टार्टअप बना रहे, लेकिन क्या गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं आ रही है कि अगर आज फ्यूचर नीड है डीप टेक टेक्नोलॉजी में हेवली इन्वेस्ट करना, बिकॉज इट नीड्स ह्यूज कैपिटल. मैं बोल रहा हूँ कि डीप टेक के पहले गवर्नमेंट
should simplify. Lot of it has been simplified, but we are nowhere close to the simplification. I'll give you an example. जी. We changed our name from Airtight Networks to Mojo Networks. Okay. It was a simple communication in California that henceforth this is our, California certificate for this company. Henceforth, it is Mojo Network. In India, it was a nightmare just changing the name. Oh. My time, I used to tell my admin guy, put a camera, how many signatures I do in a month. Oh. Such a pain. It is still. So we have moved a lot. But are we as good? See, if you have to be the best in the world, na, you can't say कि मैं delta इतना करके आया हूँ. अभी you're still behind. कारण क्या है सर? I think we have, I don't want to make comments on things that I don't fully understand, but ease of use has gone up. But if you want to be world leader, you have to be really world leader in ease of use. We are not. Angel tax. There's a bunch of stuff on which we have made progress, but that progress is not adequate for us to become top 2 or top 3 economy. Let me put it that way. Service, I think we have a head start, and I think now I am actually saying specialist service companies are evolving. Exactly. Engineering service. We will get disrupted very soon. We are going to face huge challenge. No, we are actually creating challenge to the Germans, to the Europeans, to Americans, because we are now coming with, now there are PhDs who are creating service companies, not just software, but engineering service. Engineering service and software, I do agree, but there are other services industries where we are getting challenges a lot. We will get challenges. So you have to do better there. And sir, what I feel, so for example, if you talk about Saudi, you talk about Dubai, right? They have realized how sooner their oil is going to get exhausted. And they are investing big man because they are futuristic leader. And you have seen that, and since we are very close to independence, it's tomorrow, you have seen how Singapore has grown. And believe me, small yeah, but still. So do you think that our population is the problem, or mindset is the problem, or leadership is the problem? I think our mindset is a problem. See, I don't want to blame government for everything. They are also people like us. If you take an IAS officer, he or she probably graduated from one of the colleges like you and I did, and they took a public service exam, right? I have seen government, at least at the senior level, quite receptive to listening. They have created a system where even the best individual produces not average result. Now they have to sort that piece out. People have to sort that piece within ourselves, that we are going to create global. जैसे आप बता रहे थे स्टार्टअप्स का, आज जब बातें चल रही थी तो मैंने ये बताया कि हम एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं पंकज, ग्लोबलिटी. हमारे मेंटरिंग प्रोग्राम में ग्लोबलिटी का मतलब ये नहीं कि आप ग्लोबल कॉर्पोरेशन हो. ग्लोबलिटी का मतलब है कि आप एकदम लोकल बिजनेस कर रहे हो तो भी आप ग्लोबली कंपेटिटिव हो. In your processes, in your methodology, in your technology. And passing the value. Passing the value, your R&D. In your own field, you must be like a globally competitive. That globality हर entrepreneur को समझना चाहिए. तो मैं तो ये भी बोलता हूँ कि इंडिया सेंट्रिक मत बनाओ, ग्लोबल सेंट्रिक बनाओगे तो इंडिया में हमेशा बेच पाओगे. स्पेशली जब हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा डोर ओपन, जस्ट इट्स नॉकिंग द डोर लाइक ह्यूज. करेक्ट. आई थिंक वी आर गुड इन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग. We may not be as effective, we may be good, but we are not as competitive in consumer side engineering. 3 million drones pushing a factory which runs for acres and acres. But we are good with complex engineering. That I think we can compete with the world. So I think in a multipolar world, we have to pick our bets. I think we are also good in commercialization. We're good in commercialization. Very good. We're good in very
we are very good in solving crisis. Indians do very well in solving crisis. One of the CIOs mentioned to me once, one thing I like about Indian software is minimum lawsuits. You guys are very flexible. That's so we don't realize all the stuff we see. कई बार लाइफ में ना आपको मालूम होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं. या तो लोग नहीं तो बहुत ही एकदम अपने आप को 30 मार का समझते हैं, या फिर हर चीज में डाउट रहता है. कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि मेरी ये वीकनेस है, ये मेरे को इम्प्रूव करना है और ये मेरी स्ट्रेंथ है. सर, आपने तो स्ट्रेंथ की बात कही, तो आपने पूरे देश दुनिया में काम किया और अभी बिहार पे आप फोकस कर रहे हैं. तो डीप टेक में बिहार का क्या फोकस लगता है, और आपको बिहार का एक यूएसपी जो आपने खुद से ऑब्जर्व किया, जो स्ट्रेंथ, वो आपको क्या लगता है आपके नजरिया से? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी. जब हमने कंपनी शुरू की थी, हमारे कंपनी में पहले जो 15 इंजीनियर्स थे, उसमें से IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IISc ऐसे लोग थे. उसमें एक मणिकांत करके फ्रेश कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT कानपुर जी, फ्लॉलेस, zero defect output. He was from Bihar. Okay. So that kind of capability exists, and those people have gone elsewhere. They may be in Bangalore, Silicon Valley, everywhere else, right? And I think the world recognize, at least Indians recognize, the intellectual ability and the hard work of a Bihari. Correct. What happens in Bihar? Everybody is kind of foxed. यहाँ क्यों नहीं होता है वो? Exactly. I think you can pull that together. Bihar can be a. I mean, there is no reason why Bihar, Patna cannot be like Bangalore. So, how do you see the future of startups? Though it is mushrooming, but जैसे आपने कहा कि global competitiveness. Do you see that? How are we going? Are we going the right track? We are largely on the right track. जो एक झुंड चलता है ना, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है. 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इंडियन स्टार्टअप्स की जो मुझे अच्छी लगती है, कि स्टार्टअप्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. इट्स नॉट लाइक जैसे यूएस में देखिए, देयर आर अदर प्लेसेस दे आर कमिंग, बट बिगेस्ट हब इज सिलिकॉन वैली. बिगेस्ट हब इज सिलिकॉन वैली. बॉस्टन फॉलोज देम, देन ऑस्टिन, राले. लेकिन यहाँ one of my investment is from Belgaum. Okay. Other investment is in Bhopal. Okay. So there is no, which is good. The दूसरी बात अच्छी है कि investors, at least at angel level or even funds, if you are a fund in Bangalore and you find a company in Pune, they will invest. और ऐसा बहुत ज़्यादा regional ये नहीं है, which is the other good thing. Third thing which is good about Indian founders is they are they are tenacious and they are conscious of how much money they spend. They will not waste money by and large. There will always be some outside. So their ability to survive is much higher than a founding system where there is a lot of spend out there. Now if you add to it bright ideas, so we need those lot more bright ideas to come into that. There is a lot of Me Too happening, as you said. And हम ये मैं तो ये समझाता हूँ, if you're like, आपने कभी वो मैराथन देखा है, 1000 लोग शुरू करते हैं जी, तो आपको हसल करके 5 किलोमीटर के बाद कम लोग रह जाते हैं, है नहीं? तो यू हैव टू फाइंड ए वे टू गो लॉन्ग डिस्टेंस. वो 5 लोग तभी रहेंगे जब वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस and the value exactly is intact. The value they are creating, some of them will create all of that. तो सर बिहार के स्टार्टअप्स में वो वैल्यू, वो कॉम्पिटिटिवनेस, आई थिंक बहुत शुरुआत है, अभी काफी काम करना है यहाँ. आई नॉट से दैट कि हम यूनिकॉर्न की तरफ पहुंचे नहीं पहुंचे, बिकॉज यूनिकॉर्न इज नॉट ओनली डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर सक्सेस. मुझे क्या लगता है, यू कैन नेवर स्क्रिप्ट ए तेंदुलकर और ए विराट कोहली. You cannot script it. They happen. Yes. Huh? Or Rohit Sharma or anybody else, Sunil Gavaskar, Kapil Dev. Yeah. They happen to the system, and it's good that they happen because they move the needle significantly forward. So, but if you create an ecosystem where founders are being created, you will find that. Product की अपन बात करते हैं, Zoho was a success. Yeah.
It didn't come out of Bangalore. It came out of, so you will find smart founders will be there and they will do it. To me, IPL is a more amenable model. Large number of cricketers finding their bearing in an environment rather than just 11 very eclectic select people. Exactly. You know, today I have a career as an IPL, and we are also finding a larger ecosystem to pick players for our even test match, test cricket. Right? So large number of startups who are creating jobs, creating vibrancy of this thing, reducing the burden of job creation on the government, which is struggling with many things. I think to me that is a more desirable thing. You know. सर अभी जैसे हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं and we are talking, since you come from TCS, and the latest news which is coming from TCS because of the tariff, I don't know, or the US issue, whatever may be, there are almost huge layoff happening. So how do you think that these companies, do they have a social responsibility or they will just think about their profits? It's a balance. उनको अपने सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए. See, the disruption of OpenAI, large language models, machine learning, is significant on software industry. So this will hurt. This will hurt. How much this will hurt, where you draw the line, is a tricky question. So अगर आपने बिल्कुल ही नहीं किया तो your profit will go down, your share price will go down, and you will hurt retail investors. So you will hurt population. If you do surgically let go of people, you will hurting another side of the population. So it's a tricky call for them. In the larger, longer run, I think technology has always created more opportunities. I think it's every 10 years that comes. Technology create. जब automation आया तो यही बात कही गई. There is another issue with current large number of software people who have been there for last 20 years. See, GCC took the solution concept out of the industry. Correct. So there are people who joined, and I'm part of 1,000 people. I'm managing 10,000 people. I'm managing 20,000 people. What exactly are you doing? Do you know what technology, what domain? Do you have in it you to go and talk about domain expert? I think there is a large mass of people who were administered these projects, not managed or led the project, administered the project. I think their skill set is an issue today. So, but when it comes to skill set, corporate की responsibility है कि भाई they should skill. Just putting a mandate, because if you talk about AI, you talk about Infosys, you talk about TCS, you talk about Tech Mahindra or Wipro, they have hugely invested in AI. And what I personally see, there are a lot of verticals कि ठीक है चलो आप training कर लो, आपको सीख लेना है, but where is the mentoring? It's not that the 80, 60, 70% of the resource base are not good learners, but is that we give a right path for them to learn, but that mentoring, because IT industry सोचता है कि they need ready-made people and deploy them, but the middle management or their supervisors, either they don't get time या उनके पास समय नहीं रहता, या फिर mentoring तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं के बराबर. See, finally, management is responsible for any problem, one way or the other. Mentoring your team is a part of your responsibility. If you've got people who are not of caliber, it's also your responsibility. Why did you hire them to begin with? You know? But it's easier for us to have this conversation on the sidelines, because the AI has hit them very hard. So do you think this will continue? I think there would be injuries. Let me put it this way. So you're giving a big warning. There would be injuries. But I am also seeing there are a couple of founders I am meeting next week.
and they're using AI, and they've cut down the human element by about 80%. Huge. By 80%. Now, people like this will suddenly skyrocket and build companies and deliver software powered by AI. So such companies will also come. There will be managers who, if I were a smart manager and I was getting, because of a large company, I was getting into the bureaucracy, now I cut loose. All of them have a war chest. They are not on the road. So these firings are not like worker being fired who doesn't know in 2 months where the money will come from. These are people who are well endowed. They can live by themselves for a while. They would need jobs, but they are not on the road. They are professionals they're technology professionals if they're true to their salt. So they must be able to find their way through risk. I would not put responsibility of my training on my company. It's too risky for me to ask somebody else to look after me. I want to make sure that I am competitive, I am fully trained, I spend that extra hours to coach myself, to be relevant, to be useful, so that my job, nobody moves my cheese. So that's right. But do you think that current work pressure allows the IT resources to invest so much time on completely absorbing new technology, doing a prototype, or completely getting into a project to absorb it? मेरे लोगों से बात की है ना, वो जितना काम करते हैं उससे एटलीस्ट 20 से 25 गुना काम हम लोग करते थे. आप एक मेंटेनेंस पे प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारा काम नहीं होता स्टेबल सिस्टम्स में. पर ये भी सर एक सच्चाई है कि जो 7 साल का एक्सपीरियंस से उम्मीद हमारे समय में था, आज 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले से उम्मीद आईटी इंडस्ट्री कर रहा है. तो वर्क प्रेशर इज ह्यूज. तो एक्चुअली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. सी, अगर आपके पास बड़े ओहदे का काम आ रहा है जब आप जूनियर हो, ये बहुत अच्छी बात है. यू विल ग्रो फास्ट. उल्टा क्यों सोचो आप कि मेरे को क्यों दे रहे हैं? But because of that, a few suicides have also happened because of work pressure. What is your view about वो मेरे ख्याल से काम का प्रेशर नहीं, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है. Okay. जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला साल मेरा TCS में, आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 9-9:15 बजे से मैं सारे आउटपुट लेके जाता था अपने मेरे क्लाइंट के पास. मुझे डांट भी पड़ती थी, ये तुमने नहीं किया, वो किया. आई यूज्ड टू कम बैक, फिर प्रोग्राम को पैच मारता था. कुछ चलते थे, कुछ नहीं चलते थे. रात को 10 बजे के बाद मुझे मेन फ्रेम कंप्यूटर पूरा मेरे हाथ में मिलता था कि जितने भी प्रोग्राम लिखो, कंपाइल करो, टेस्ट करो, फिर पूरा रन करो. 2:30 बज जाते थे. 2:30 की लोकल लेके जाता था. मुझे जितना सीखने को मिला उस टाइम, I cannot explain to you how strong I became, because and there were times when I had to make sure कि 4 घंटे का रन है, this program has to now work in first test. किया उसको, I would compile it, I would get it go. My team, मतलब टीम क्या, मतलब हम जो कंप्यूटर चलाते थे ऑपरेटर, अरे यार तू फिक्र मत, चल जाएगा तेरा प्रोग्राम. नाउ द अमाउंट ऑफ स्टफ आई लर्नड हैज स्टेड विथ मी इन माय ग्रोथ. अगर आप वो नहीं करोगे, आलसी रहो, आलसी आदमी, मेरे को आप बताओ किसने प्रोग्रेस किया है? एग्जैक्टली. तो ये जो जरूरी, सी आई एम नॉट आई गिव वन थिंग दैट एवरी person who joins software industry has a graduate degree. 100%. है नहीं? I'm not a worker कि भाई 10वीं पास करके और ऐसा नहीं होगा. Exactly. He is mature guy. You need to look after those people. You have enough handful maturity. है ना, maturity है, वो डिग्री है आपके पास. You know your pros. Exactly. So आपको अपनी जवाबदारी होनी चाहिए. I think you've given a very clear message. If I'm running a worker, you know, जो 10वीं है, 8वीं है, जो बेचारा घर जाता है, जाती है, I will look after them differently. I will train them. I will make sure that they are not on the road. These people, I am putting an onus on them to make sure that they are there. I mean, US में क्या होता है? US में you are responsible for yourself. So I think आपने बहुत अच्छा guidance दिया सर कि भाई take it positively and take this opportunity. True. And if you are grabbing this opportunities for your own wellness, correct. Your well-being and your sustainability in the industry. Correct. And of course, IT इंडस्ट्री ऐसी है, मैं हमेशा कहता हूँ, लॉयर, डॉक्टर, IT इंजीनियर आपको जिंदगी भर पढ़ना है. You have to, otherwise you're out. You're so right.
You're so right. Lawyers करते हैं. Exactly. They're always current. Doctors do it. Chartered accountants, finance professionals, they go Otherwise, you're out of market. You're out of market. You're a professional. You earn a living better than others. And there is a price. There is no free lunch in the world. और एक चीज और भी मैंने देखा है, IT रिसोर्सेज को अपनी जेब से लर्निंग के लिए पैसा खर्च करने में बहुत कतराते हैं. सोचते हैं हर चीज कंपनी स्पॉन्सर हो. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन फ्यूचर, यू हैव टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर पॉकेट एज वेल. एग्जैक्टली. देन ओनली यू कैन सिक्योर. मुझे याद है कि TCS में जो हम लोग थे शुरुआत में, ये कहा जाता है कि 8% ऑफ योर टाइम यू शुड स्पेंड ऑन योर डेवलपमेंट. मैंने उसको कैलकुलेट किया बाद में, हाउ मच टाइम एंड व्हाट यू कैन डू विद दैट. You have 52 weeks, say 8 hours per week, 5-day week. You have so much time. If you put so much time in 2 years, 3 years, how far will you go? It's a tremendous growth model you can do, and people have to do it if they want survive. Today's time, if they want to keep their job, that's the reality. सर, कोविड के बाद ये इंडस्ट्री कैसे बदली? And what are the big changes we observe? Because work from home एक कल्चर बहुत रेयर था. नाउ इट हैज बिकम अ नॉर्मल. तो आज कंपनी पुश कर रही है कि भाई वर्क फ्रॉम ऑफिसेज फिर से वापस जाए. तो हाउ डू यू सी द चेंज? आई थिंक इट्स ए इवॉल्विंग मॉडल. See, one thing which I noticed was location was not a constraint to hire people. अच्छा, you're in Bhopal, you can start working. Provided वो कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशन ना हो. तो आपको मतलब एटलीस्ट a desk job. Desk job. I could sit. I know people in my family who, one of my nephew got married and he was in Delhi, and his wife used to work for a Pune company, and so she was working from Indore. Now she started working from Delhi, so she never was in Pune. So that was an advantage. I think somewhere the social moisture of an office where you meet people, I think that was compromised. That was compromised in the remote working. I have a feeling, though I don't have first-hand experience of doing this, somewhere productivity may have been hit in certain types of jobs. So therefore leadership saying that you come to the office. But that is, to me, saying that everybody must be in the office. Not only you are messing around with this, you are increasing your cost, you are putting traffic on the road. In Bangalore, you are killing productive hours as well. Killing productive hours. If you have women as working, they have family responsibilities. You're making life difficult for them. So I think flexibility in this space. If you can work from remote, I also feel that maybe some effort should be done to bring those people into. Let's take TCS, because we've been talking about TCS. Let's say we are in Indore area. Okay. And now TCS obviously has a campus there, but let's say we are, in Devas or in Dhamno, whatever, some area where there is no TCS office, and there are about 20 of us who work there. Can a environment be created? We all get together, hire a workplace, temporary workplace where we all go there, work for a day or two, twice a week, 1 day a week, so that you preserve best of both sides. I think getting best of both sides is the right way, because if you can cut down the cost, you become more competitive. So you talked about the toxic work environment, and there are a lot of diplomacy happens everywhere in every industry. And now say we do appraisal system performance review. Do you think that is really being carried out to really gauge the performance, or it has become just a... See, my experience as a CEO or a founder, most managers are not coached or trained to do genuine performance review. So they are, I'm saying most, I'm not saying all. Some of them learn on the... So HR needs to do a more intense job of preparing a person to be an appraiser. That piece is missing. Because of which, we're not doing that. We're expecting them to be, you're a project manager, now you do the appraisal. I think we are not doing that. So some people, because they are natural leaders, do a better job. The others don't. I may be wrong here. I think the quality of leadership
people have that quality, but the quality of leadership they deliver in today's environment has gone down from the time when I was being led. Yeah, in fact, drastically it has done. When I was being led, I think my supervisors, my CEO were a lot better leaders to a point where I enjoyed my work. When I was a leader, as a CEO, as a founder, I think we brought some fun to life. And when you said कि आप ऑफिस से घर जाते वक्त सबसे मिलते हैं, इवन अगर हमारे लीडर्स वो 5-10 मिनट रोज का रोज अपनी टीम के साथ मिला है, करेक्ट, तो बहुत सारा प्रॉब्लम देन एंड देयर सॉल्व हो जाए जो आपको 10 दिन 1 महीने बाद मालूम चलेगा. करेक्ट, बट दे डोंट डू इट. they do. I don't know why. I'll give you an interesting example. When I was in Mojo Networks, we used to sell our devices through resellers and all that. After a while, the company had become reasonably good. So he said there is an opportunity for a company and they want to buy Wi-Fi devices. And so I said, ठीक है यार, मैं बॉम्बे आऊँगा तो चलेंगे साथ में. We'll go there. So we went to this company and the head of networking I was going to meet. So they had a place where they would meet all the vendors. So I was a vendor actually. Okay. I was a vendor, right? So I was waiting to be told कि आप वहाँ जाके बैठो, then he will come and meet you there in the conference room. He came down to the large reception area on the ground floor to see me. Oh. So I said, you didn't have to come down. He said, sir, I was an intern in Tech Mahindra when you were the CEO. Oh. And whenever you stepped out to walk, I remember there were times when कुछ interns, students होते थे, 3rd year, 4th year, PICT, COEP, they would be given projects and I would sort of walk through them. क्या चल रहा है यार, तुम्हारा कौन सा internship है, job का क्या है, higher studies करना है. I would just sit for 10 minutes, talk to them and go away. Now, that got me a qualified entry because one of them became a head of networking. Really I simple. think you being simple and social, I'm not saying कि do, but थोड़ा तो आप. Exactly. I'll give you one add to your example. I was in Malaysia and all of a sudden one of the social side, my team who was there in Malaysia, which I didn't knew, मुझे पता नहीं थे वो मलेशिया में है. They came to know कि मैं मलेशिया में हूँ. They called me and they had a taxi and took me to the restaurant. पूरे रास्ते में उसने ड्राइवर को, उस टैक्सी के ड्राइवर को बोला कि भाई आज जो मैं पीछे हूँ ना, ये जो पीछे बंदा बैठा है उसके चलते, उसके कारण करो. और पूरा रास्ता भर तारीफ करता रहा. तो अगर इफ यू डू अ प्रॉपर मेंटरिंग, they give you so much back. They give you so much back. There is no reason. But we don't realize it. And you don't need to be. See, there were times when I was actually fairly demanding. And my wife says you're very demanding. But I put a. अब बिहार के लिए बहुत demanding हो गए सर. I put hard behind. If there were things that if I had to fire, I have fired people. Yeah. But keeping their career in mind. Yeah. कि तुम क्या करने वाले हो. See, ये mistake है. This I cannot change. What is your plan? And people have remained friends with me, whom I fired because they said that is the best thing happened to me because I did something else because of which I grew. So I would also be tough, but not nasty. I would say, look, next 5 minutes a difficult conversation because this is the reason. I would announce that I'm going to be quite intense now. So at least, ठीक होता है ना, when you're not every day is not a rose garden, ना? Things do happen. So, but थोड़ा सा आपको simplify करना लगता है. As a senior person, you might need to make life easy for others. Yeah. सर बिहार में आते हैं सर, आपको you have been a freak, आप यहाँ बिहार में अक्सर आ रहे हैं और बहुत मेंटरशिप कर रहे हैं, and thanks to for all your effort. लेकिन अभी तक एक तरह से लैंडस्केप आप समझ चुके होंगे बिहार का. एक जो सबसे एग्जैक्टली सबसे बड़ा सवाल जो अभी इंडस्ट्री के लिए है, सिंस यू कम फ्रॉम आईटी फील्ड, और हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि एक आईटी जॉब 7 एडिशनल इंडस्ट्री की जॉब को क्रिएट करता है. राइट. एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. और मैं शायद लगभग 5-6 साल से चिल्ला के पूरे बिहार में ही कह रहा हूँ, खासकर कि भाई आईटी को लाओ, क्योंकि वो 7 एक आईटी जॉब 7 ऑडिशनल जॉब को देता है. एंड दिस इज, आपने पुणे को देखा 2000 में और 2004 में क्या था, जब पूरा हिंजेवाड़ी या फिर उधर वागुली पूरा फैला, एंड हाउ मच इट हैज एलिवेटेड द एंटायर रेवेन्यू एंड द ग्रोथ ऑफ द सिटी. तो जब इतना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्या कारण है कि बिहार
आज आईटी में देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट निल. See, you know, unfortunately, industry leaders or industries would have benefited from Bihari talent, but not necessarily, investing in Bihar either as a center or something, because they had other choices, be it Pune, be it Hyderabad, be it Kolkata, be it Indore. But tier 2 city में भी तो expand हुआ. Why not a single city of Bihar? Because of I think to me, the impression about Bihar was not very positive. So one would not go and do that. So that would be one reason. Because of it, it has not happened. Having said that, I think the understanding has changed significantly over the last 8 or 10 years. Okay. The issue that you would face today is they're downsizing rather than upsizing. So, but I think entrepreneurs who have built companies, scaled up companies, if they create centers here, so let's say one large center versus 15 small offices, not a bad thing to have, and I think that can happen. That is one part which I feel the local leadership here should try to. Let's say I'm from Bihar, I'm running a company, I have an offshore center in Bangalore, I live in the US, I have 200 people working in Bangalore. Next center, rather than Hyderabad or Pune, I'm sure Pune people will kill me for this, I do it in Patna. Of course, and see, जैसे हम सुबह में डिस्कस कर रहे थे कि the cost effectiveness, the disruptive mindset, out of box solution, alternative solution, बिहारियों में कूट के भरा है. Correct. And believe me, and there's no substitute, and there's no hard worker than Bihari, and the entire world knows about it. Correct. They're very hardworking. Just because of little bit stability factor, how can we be zero? कुछ ज्यादा ही हमारे साथ जाती नहीं हो गया सर? नहीं, I think to be fair, businessmen moved out of here. They moved out of here because they did not feel safe here. There was a time when it was there. It changed later, but once you move your business out of here, bringing it back here requires an extraordinary effort. So I think that's an issue. Today's environment, I think, is very different. It will require a sustained effort from the government, local industry, and everybody else to do that. सर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार बहुत सी सब्सिडी दे रही है. क्या सर आपको लगता है कि सब्सिडी ही काफी है इंडस्ट्री को यहाँ सेटअप करना? क्योंकि anyway, उस सब्सिडी में बहुत challenges है, वो अलग बात है. in the subsidy enabled industry, so हम कोई सब्सिडी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. In technology, we don't expect any subsidy. So if subsidy works, I think government should continue to do that as long as it can. But there may be other triggers, hot buttons that you want to press. Ease of living. They say you land at the airport and within 15 minutes you're where you are. Now, it doesn't happen in Bangalore. It doesn't even happen in Pune. So that kind of a size, Gaya, I think, is a tremendous place. There is a spirituality to it. There is a global brand to it. I think that can be promoted from that angle. So multiple things. I think somebody should maybe sit down and. सर ये तो चलिए भारत की बात. People have to become more. See, what I find here is someone like me comes, they will be hesitant to ask questions. So now I think because in Thai ecosystem they see my face more often, they are more in Pune or Bangalore, they will be open to ask a question from the minute one. I think that openness should happen. I think people are smart here. I mean, people are smart all over the country. I mean, there are smart people everywhere. I believe you can't say कि एक region है. Exactly. Hardworking, definitely. I think much more over here. Yeah. Sure. सर आपने टाई पटना में बहुत सारे स्टार्टअप को मेंटर किया है. एक अच्छे मेंटर में आप क्या गुण देखते हैं? मेंटर हैज टू, वो जो जिसको आप मेंटर कर रहे हैं ना,
उनकी डीएनए, उनकी प्रवृत्ति, उनकी ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए जी। और मतलब दोनों को ट्रांसफॉर्म करना ही आपकी जॉब। जैसे गुरु होता है ना, अच्छा जो गुरु होता है वो गुरु आपको बनाता है, है? तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करता। अच्छा गुरु फोर्स नहीं करता है, आपको डिसिप्लिन में रखता है, आपसे करवा लेता है जो आपको मजा आ रहा है जी। अच्छे टीचर होते थे ना, वो काम करवा लेते, ये हो एक्सरसाइज करनी है, वी यूज्ड टू लव देम बिकॉज दे वर गुड विथ अस। वो बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे स्पेशली स्टार्टअप का मेंटरिंग में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फाउंडर्स आ जाते हैं, उनकी टेक्निक्स आपको समझ में नहीं आती है। तो आपने उनको कुछ बताया, वो अलग तरीके से कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है मेंटर को समझना कि ये जो आपने कहते हैं बियॉन्ड बोर्ड करके टेनिस प्लेयर ऐसा डबल हाथ से वो मारता था बैकहैंड, है नहीं। अब आपको अगर समझ में आ गया कि ये सारे प्लेयर ऐसे मार रहे हैं लेकिन ये ऐसे 2 हाथ से मार रहा है लेकिन इसका बैकहैंड पावरफुल है, डोंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग अनयूजुअल थिंग्स, बिकॉज कई बार यू विल फाइंड फाउंडर्स अलग टाइप से। तो ये मेंटर को समझना चाहिए। मुझे दूसरा लगता है कि शुरुआत में पर्सनल इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटरिंग इज नॉट एडवाइजरी, कंसल्टिंग, एडवाइजरी एंड कोचिंग, मेंटरिंग ये तीनों कंबाइंड है विद ए हार्ट। जैसे हमारे रवि निगम, हमारे टाइप पुणे के चार्टर, वेरी गुड फ्रेंड, पास्ट प्रेसिडेंट, ही सेज मेंटरिंग इज ऑलवेज विद ए हार्ट। नहीं तो तुम कंसल्टिंग है ना, कंसल्टिंग करते हो आप, एडवाइजरी करते हो, तो ये दूसरी बात, लिसन बिफोर यू। कई बार क्या होता है मेंटर, अच्छा दूसरा हम लोगों के साथ क्या इशू हो सकता है कि सी वी आर एल्डरली लॉट, हाँ, तो समटाइम्स आवर टेक्निक्स मे नॉट बी कंटेम्प्रेरी टुडे, सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। और मैं एक बहुत सिंपल बात करता हूँ, मैं मेरे फाउंडर्स को बोलता हूँ कि तुमको whenever you feel like reaching out to me, don't hesitate, give a call. शायद वही एक पर्पस भी है डाई का कि you will not be let alone. Correct. No, it is my pain that I have to turn down your call because I am saying, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, किसी का फोन आ गया, बेचारा दुखी है, I will not be able to take the phone call, ना, लेकिन होने के बाद I'll call back. But whenever you feel like, give a call. उनको जो उससे सुकून मिलता है ना कि I have someone to reach out to, it's sometimes not different than your grandma who gives you सुकून. Exactly. You know, she doesn't know what you're doing, but जहाँ डांटना है वहाँ डांटती भी है, लेकिन पे लाना है। किस दिन खराब हुआ ना तो आप कई बार दादी माँ या नानी माँ के पास जाते हैं। Exactly. So sometimes mentoring is also that bringing out the best. See, मैं हमेशा बोलता हूँ you are not making that startup successful, you're building that individual as a founder. In fact, my first mentor in our nurture program, that company of theirs did not, it failed. Okay. But whatever we may have done, his second, third company survived. Today is not only he was a charter member, he is treasurer of Type. A lot of lessons learned made this success happen. हाँ, so you, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो you actually go to take a degree and that degree you use it for your career. तो मेंटरिंग का भी वही हिसाब, वो मेंटर्स ने दिमाग में रखा। समटाइम क्या होता है, वो मेंटर्स एकदम डोमेन में उसमें तुम्हारी ये थोड़ा समझो उनको, थोड़ा उनको समझो। तो डिग्री की बात उठी है सर, जो बिहारी जो डिग्री लेके आज बाहर इंडस्ट्रीज में जा रहा है, डू यू थिंक दैट इज एनफ? क्या वो काफ़ी है? यहाँ बेसिक डिग्री की जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ अगर आपकी डिग्री अगर अच्छी हो तो यू हैव मोर ऑप्शंस. Most people will go wherever they get a professional job. I think the trick will be to create that option here in Bihar. अभी जो चल रहा है सर, यूएस का टैरिफ और 25 से 50% हो गया, आईटी इंडस्ट्री पे इस पे कितना भारी असर पड़ेगा? ये टैरिफ आईटी इंडस्ट्री, मुझे मालूम नहीं, आईटी इंडस्ट्री सर्विसेज अभी नहीं है उसमें। बट आपको पता है ट्रम्प साहब का भी हर सुबह में कुछ और मूड और शाम में कुछ और मूड, कल कुछ और परसों कुछ। You have to manage it. And don't you think that ये एक भारतीय सर्विस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी की तरफ भी है? Oh, it's a big opportunity. It's a big opportunity to diversify, to make yourself competitive.
टू गेट द एफिशिएंसी, हम प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी की बात कर रहे थे ना, क्रिएट न्यू मार्केट्स, reskill yourself on business development, reaching out. There's a whole lot. I think it'll do good to India. India should have done some of these things by themselves, which we are now forced to do. So in a way, सर आप टाई पे इतना समय दे रहे हैं और टाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरा ग्लोबल है और ह्यूज कैपिटल है, एंड वी हैव वेरी वेरी ग्रेट entrepreneurs, successful entrepreneurs, mentors, guides, and the angel investors there, and it is across the world. And Bihar needs that mentorship. Bihar also need that angel fund and the guide and the guidance. So what would be your effort? And since you are also mentoring the Patna chapter, and so what do you think, where do you see that कि बिहार के लिए टाई how prominently is going to be, because events बढ़ रहे हैं पटना में, टाई पटना का, and अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं, and expectation is huge. तो आपको कैसा लगता है कि बिहार and with टाई being there, किस तरीके से आगे इंडस्ट्री में बढ़ सकता है, इनोवेशन की तरफ और स्टार्टअप की तरफ? See, एक तो we can bring a lot of things here which we will. जैसे टाई पटना ने जो मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है, दे इनोवेटेड थिंग, दे डिड ए प्री नर्चर. मतलब नर्चर में हमारा, हम तो पूना में क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उनको सीधे नर्चर में डालते हैं, इन्होंने प्री नर्चर किया, विच इज़ गुड. सो दे आर प्रिपेयरिंग द फाउंडर्स फॉर द नर्चर प्रोग्राम. वो एक अच्छी बात है. आज ही हमारी बात हो रही थी कि जैसे पुणे में ये 13 साल से चल रहा है प्रोग्राम जी, तो हमारे कई चार्टर मेंबर्स हैं वो एकदम सधे हुए हैं, उनको मालूम है मेंटरिंग. तो हमने सोचा कि यहाँ पहली बार मेंटरिंग कर रहे तो इनको आपको किसी पे इम्पोज नहीं करना है जी, पर आपको फैसिलिटेट करना है. तो हम लोग, एक हमारा टेक्निक होता है कि जैसे यू आर एक्सपीरियंस मेंटर एंड आई एम ए फर्स्ट टाइम मेंटर, तो मुझे थोड़ी झिझक है, तो मेरे को पंकज, हम 2 मेंटर असाइन करते हैं हर स्टार्टअप को जी, और हम फाउंडिंग टीम को करते हैं, पार्टिसिपेंट को नहीं करते हैं. जो इवेंट्स होते हैं ना जी, उसमें डिक्लेयर विनर होता है वो फाउंडिंग टीम. ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है इन एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट एंड इनक्यूबेटर्स एंड एवरीबडी एल्स इज डूइंग. यू हैव टू सेलिब्रेट द फाउंडिंग टीम. अगर एक फाउंडर है तो वो फाउंडर है, लेकिन 3 फाउंडर तो तीनों को करो आप. एक को कर से फायदा नहीं, ये लकुने हैं. So they will assign me with you. Okay. So you are a seasoned mentor. So your job is to help me while we are both of us are helping you. We will do that. दूसरी बात क्या हुई कि जैसे फाउंडर्स का क्या होता है ना, आप एक पर्टिकुलर 1 या 2 एरियाज में आप एक्सपर्टीज लाते हो, लेकिन आपको सब चीज़ें मालूम नहीं होती, सब चीज़ें मालूम हो भी नहीं सकती. तो वी हैव आइडेंटिफाइड ए लार्ज नंबर ऑफ एरियाज वेयर वी हैव created formal master classes. मैं उसी तरफ आना चाह रहा था. So when you say areas, तो क्या, जैसे because Thai is a very mature body, huge experience. तो for Patna, do you have a roadmap? What do you want to see? And have you created verticals and horizontal, where who's going to focus on which area, which vertical? See, शुरुआत में क्या होता है ना जी, 0 to 1 जर्नी में आप इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकते जी. तो अभी हमारा आइडिया ऐसा, मेरा इसलिए है कि पिक ए सेट ऑफ फाउंडिंग टीम्स. ओके. सो जैसे अभी उन्होंने मेरे ख्याल से 9 या 10 कंपनी सिलेक्ट की है जी. टाई मैंगलोर ने 3 कंपनी सिलेक्ट की. टाई न्यू जर्सी ने 4 कोहॉर्ट कर दिए फटाफट. तो अभी 30-40 कंपनी कर दिए. पुणे ने 4 से शुरू किया था. तो डोंट वरी अबाउट द साइज राइट नाउ, बिल्ड इट अप, इट विल हैपन. बिकॉज फाउंडर्स आते रहेंगे, अगर इकोसिस्टम है तो फाउंडर्स आते रहेंगे, फाउंडिंग टीम्स आती रहेंगी. असाइन द मेंटर, एग्जीक्यूट, गेट द लोकल चार्टर मेंबर्स एक्सपोज टू मेंटरिंग. मेनी ऑफ देम एक्चुअली मे बी सीजन मेंटर्स, सो दैट्स नॉट एन इशू. बट जो जैसे गो टू मार्केट जी, एक क्लास है, मैं पढ़ाता हूँ वो क्लास. आपकी आइडिया को अच्छे से ठोक बजा लेना जिसको बोलते हैं, एक क्लास है वैलिडेटिंग योर आइडिया, आर यू सेट टू सक्सीड. फाउंडर्स के पसीने छूट जाते हैं उसमें. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, आपकी आगे की फेलियर को हम कट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपकी आइडिया स्ट्रांग नहीं है और वो नहीं जाने वाली है तो कट द, कुछ दूसरा सोचो.
तो ये जो कुछ कुछ क्लासेस, बिजनेस कैनवास है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये हम फाउंडर्स को क्लासरूम में पढ़ाते हैं और उनसे केस स्टडी करा लेते हैं उनकी कंपनी पे, क्योंकि वो तो फाउंडिंग टीम को लेके आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फाउंडर्स को बहुत फायदा करती है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने आईटी पटना पे एक्सपेंशंस पे बजट डाला है और आईटी पटना स्पेशली इंक्यूबेशन एक्सेलेरेटर्स में काफी फोकस कर रहा है। सो हाउ डू यू सी कि टाई पटना could enrich with their experience this institute IT पटना, कि मैं वहाँ पे पढ़ाया भी हूँ और देखता हूँ कि बहुत फोकस है। हम लोग इंक्यूबेटर के साथ एज मेंटर्स काम करते हैं जी। तो incubating is one of our pillars. So TIE doesn't have an incubator, but TIE works with, like, for example, I have been associated with IIT Bombay Sign for a long time. Yeah. I have been associated with Venture Center, जो पुणे में focusing on medtech. So we go teach there, we mentor there, we do that. We have also invested in companies that come out of this. So I think TIE is a tremendous partner for incubators and accelerators from that perspective. And I've always said that TIE Patna will work with multiple incubators and accelerators wherever they are. So that's the way to do it. Other thing is that the angel program, which is, I think, a good opportunity कि आपने mentoring की है, the company has sort of grown, progressed. Is that a good angel investment? If it is yes, it's benefit on both sides. Yeah. The charter members get to invest, and the founders get money. Yeah. So this is again, so there is no conflict here as such. जैसे हमारा टी हब है ना जो हैदराबाद में, टाई हैदराबाद के काफी सारे चार्टर मेंबर्स वहाँ मेंटरिंग करते हैं। सर एक आखिरी बट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप टेक महिंद्रा के CEO हैं, टाई को मेंटर कर रहे हैं, यू आर एंजल इन्वेस्टर, प्लस यू हैव सच एन लार्ज नेटवर्किंग। हमने आईटी की बात कही, बिहार की स्थिति को भी देखा। क्या मैं आपको एक ऑफर दे सकता हूँ कि क्या आप, हम और टाई मिलके बिहार में एक प्रोमिनेंट फुल फ्लेज्ड इंडियन बेस्ड आईटी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं? कर सकते हो तो क्या टफ है और कब तक? यू नीड अ गुड यंग founding team to create an IT company out of Bihar. Is it tough? It's not tough. I'm ready, you're ready, we have the networking. सर पहला जब हम बात कर, बिहारियों का एक ट्रेंड है, एक बार आप एक रास्ता दिखा दो, एक, मैं चिल्ला काफी दिन से बोल भी रहा हूँ, एक आईटी कंपनी विद इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और विप्रो, prominently just one. I'm not talking about call center या फिर passport office and all the stuff. एक आईटी कंपनी, can you make it? See, conceptually it is possible. If you ask me, will I participate in it? The answer is no. And the reason is not that I don't like Bihar or Patna. My time is over now. It's like you're asking Gavaskar to go and play. सर आपको बस अंगली पकड़ना है, आपको चल लेंगे हम। नहीं, वो कर सकते हैं जी, मेंटरिंग एडवाइजरी वो कर सकते हैं, बट द कंपनी हैज टू कम फ्रॉम हियर। टू गिव यू एन आइडिया, persistent systems जो पुणे में है, आनंद created that in 1990. Seed Infotech and Persistent both were friends. Correct. So Anand did that company in 1990. I was at that time in TCS research. Then I became तो वो जो माहौल था, interestingly KPIT, Ravi Pandit and Kishore Patel, they are both chartered accountants. Ravi is actually MBA finance from MIT, and Kishore is a chartered accountant, but they created an IT company. There are many others like that which came into existence. Wipro was created in Bangalore, if you recall. So Computer Science Corporation, which got acquired, created its first center in Indore. So see, founders, Mojo Networks came to Pune. Generally, all networking companies go to Bangalore because I mentioned to Praveen that look, we'll do it out of Pune. I'm not moving to Bangalore. I know Bangalore is good, but we can do it out of Pune. So founders, you will need founders who will do that. And if the ecosystem is building as a startup hub, things will happen. ये होती है सर, हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन अगर उस बात में एक भी कॉन्क्रीट स्टेप लेते हैं
तो दैट इज मीनिंगफुल। सो जो टाई पटना का जो इनिशिएटिव है जी, उसमें नर्चर का जो इनिशिएटिव जी, है, दीज आर कॉन्क्रीट स्टेप्स टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर। जी। खेल तो उनको खेलना है, खेल उनको खेलना है। इसी खेल में तो बिहार उलझ के रह गया सर। हाँ, और कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा हो गया। एक समय था हमारे आईटी मिनिस्टर भी बिहार से ही थे, लेकिन क्या करें, चिराग तले अंधेरा रहा। मुझे क्या लगता है मालूम क्या, आई थिंक वन शुड नॉट, आई वुड नॉट गो बैक एंड से क्यों नहीं हुआ, बिकॉज उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट लुक बैक। जैसे कई बार पुणे में आई हियर दिस थिंग कि बैंगलोर वी आर वेरी गुड, बैंगलोर इज गॉन अप। मैंने कहा तुम देखो नहीं हुआ है ना, रियलिटी इज नॉट हैपेंड। बट पुणे इज डूइंग गुड, पुणे इज डूइंग गुड, पुणे इज वेरी स्ट्रांग। सो मैं बोलता हूँ डोंट गो आफ्टर वॉल्यूम। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू मूव टू टायर 2 सिटी। सी बॉस्टन की वैल्यू सिलिकॉन वैली के साइज से कम नहीं हुई है। सो इट your confidence that Pune has I was a conference chair for TiCon that happened in February. Engineering, food, deep technology, biotech, IT, and entertainment. All these industries exist, and Pune entrepreneurs are serious entrepreneurs. So it is not about size; it's about the substance in Pune. एक बार मैंने कहा था, देवेंद्र फडणवीस और तेजस्वी सूर्या दोनों एक साथ मुझे मिले, तो मैंने कहा कि भाई पूरी की पूरी इंडस्ट्री तो आप दोनों में सम्मिलित हो जाती है। एक तेजस्वी सूर्या लीड्स फ्रॉम बैंगलोर कंप्लीट आईटी इंडस्ट्री, एंड देवेंद्र फडणवीस जी इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप दोनों अगर थोड़ा भी फोकस हमारे बिहार पे कर दो तो भाई बिहार तर जाए। Sure. तो कहते हैं कि पहला स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। एटलीस्ट द फर्स्ट कंपनी शुड कम, फुल फ्लेज्ड कंपनी, एंड देन सी सर वी विल, इट्स अ प्रॉमिस दैट बिहार विल नॉट लेट यू डाउन। I think another thing that might if you see there are a lot of companies. You take the top, which are the billion or multi-billion dollar club. There are a lot of companies of 500 million, 600 million, 200 million. They are big companies. See, $300 million company is not small company, you know. I think some of those come to Patna or Gaya or Bihar, and 10 of them come. You got the party going there. Exactly. And I'm not sure कि policy makers समझते नहीं. For example, semiconductor establishment. First was in Maharashtra, then in Assam, and now 4 more. But nothing to Bihar. But there's a lot of opportunity. We could have done it. But I don't know why policy makers are not still focusing on Bihar. Just bolna is and do. See, execution is very important. You know that in the entire project management cycle, execution is very important. So I think government should now act rather than words. This is also, if you look at US, Yeah. the technology entrepreneurship is only in select pockets. आप देखिए वहाँ भी, है? But good thing in India is that there is no hard and fast rule like that. तो ट्राई करो यहाँ तो हो सकता है. मतलब हमने कोई ऐसा मतलब ये बताया कि सिर्फ सिलिकॉन वैली मतलब सिर्फ बैंगलोर में ही होगा ऐसा नहीं है. It's fluid. Even Bangalore, I think they should have a little bit more focus on Mysore, जो अभी भी नहीं हुआ, which I always see that. So क्या होता है? Otherwise, practical Bangalore में इतना burden नहीं होता. Practical difficulty companies के लिए ऐसी होती है कि people don't join you because they would like to be in places where the jobs are available. Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai, they provide that job market. But sir, don't you think it's time for decentralization? जब RBI बना था, it was not clustered to one state. It was on the metro cities. आज मैन्युफैक्चरिंग पूरा मुंबई में हब बन के रह गया है. Financial capital, why only Mumbai? ऐसे ही होता है मतलब. Even Maharashtra is also facing a lot of issue because entire focus is on Mumbai. They have a lot of drought areas in Maharashtra, but all their focus is on Mumbai. I'll tell you one other thing which I find lacking in India. Cities don't have a constitutional support. State has. Cities don't. Okay, yeah, Cities are administered by state-appointed commissioners and there are elections like mayor, but they are, you know how, it's not like US. Okay. So if you want, for example, just imagine a situation where Patna had a CEO and all people in Patna came together saying we're going to make Patna better. I think that would be a compelling argument where you will succeed, but that is a structural issue in India. Let's hope. उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, and बहुत अच्छा लगा. I'm very hopeful. I'm very hopeful because I see a positive
aspirational environment. So I'm very positive on that. Yeah. And then that's of course a ray of hope, and with leaders like you coming frequently, because जब किसी शहर किसी प्रदेश में आप जैसे लीडर फ्रिक्वेंट आ रहे हैं, ये साफ संकेत है कि दिन बदलने वाला है और वो अंधेरा छटेगा और रोशनी की किरण ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक ज़ोरदार धूप इस प्रदेश और हमारे करियर और हमारे भविष्य पे जरूर पड़ेगा। और आप जैसे मेंटरिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं कि आप इधर आ रहे हैं और हमारे स्टूडियोज़ में आए सर। तो आपका बहुत बहुत दिन, आपने इतना टाइम निकाला, इतना रात 11:30 रात हो चुकी है सर। मेरी ओर से कभी भी ट्राई के लिए उद्योजक उद्यमी के लिए हमारा टाइम हमेशा है। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया और बिहार की गूंज में आए। अब नाम ही ऐसा है सर, बिहार की गूंज। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर शख्स जो बिहार के लिए कुछ कर रहा है उसकी आवाज़, उसकी गूंज पूरी दुनिया में रोशन और गूंजे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, जिंदगी का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन सही सोच और सही कर्म से हर मोड़ एक नई मंजिल बन सकता है। यही सोच हमें आज किरण सर से मिली, एक सोच जो आने वाले कल को रोशन कर सकती है। आज की ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं बल्कि रास्ते में मिले हर इंसान के जीवन को छू लेने में है। किरण सर ने केवल भारतीय आईटी उद्योग और वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि बिहार जैसे राज्य को और उनके इसके लिए सब संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश कर रही है, तब स्टार्टअप और डीप टेक भारत की नई पहचान बन रहा है। तब आपके अनुभव हमें यह दिखाती है और सिखाती है कि विजन, साहस और सही रणनीति से कोई भी भूगोल हमारे प्रगति में बाधा नहीं बन सकता। बिहार की गूंज मानती है जो सच्चा है वही टिकेगा और जो दिल से छू ले वही गूंज बनकर हमेशा सुनाई देगा। यह सिर्फ बातें नहीं, यहां सिर्फ बातें ही नहीं होती, यहां से नजरिया निकलता है। और आज किरण सर के साथ ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि सपने उम्र या हालात से नहीं दिखते, बल्कि एक साहसिक कदम की जरूरत होती है। बातचीत खत्म होती है लेकिन सीख जारी रहती है। किरण सर के शब्दों की गूंज शायद आज से बहुत आगे तक हमारे अंदर गूंजते रहेगी। फिर अगले एपिसोड बिहार की गूंज से फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। किरण सर, बिहार की गूंज पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद, मेरे बहुत मजा आया, अच्छा लगा। थैंक यू सर।